So good morning everyone. So good morning student. आज आमे किछि important question करिवा जो होची फिजिक्स रो किछि important question. तो सुनील बेहरा गुड मॉर्निंग. देखो बेले फर्स्ट क्वेश्चन होची कोन ना फॉर व्हिच डायोड इज यूज्ड. डायोड कोन पई यूज करा जाय. डायोड कोन पई यूज्ड करा जाय. डायोड कोन पई यूज करा जाय. What is the use of diode? Anyone? What is the use of diode? डायोड हमें कौन पर यूज करा जाए. देखो बेले फॉर व्हिच डायोड इज कौन पर ना ड्यू टू प्यूरिफिकेशन. प्यूरिफिकेशन पर हमें कौन यूज करथो ना डायोड. फॉर प्यूरिफिकेशन वी आर यूजिंग डायोड. तापर कहला देखो हु अमंग द फॉलोइंग who among the following developed the technology of underground nuclear explosion. जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए बाहर करथिले ना डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा. मन रखिबो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जोड़ा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर नाम रे नामित. दैट इज योर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जोड़ा सेटा बुझला. तापर देखो व्हिच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड मोस्ट हीट पर यूनिट एरिया. Which among the following types of coal produce most heat per unit area? Most heat per unit area कोडा ना lignite. Lignite नो anthracite. कौन हुआ पिला एटा anthracite मन रखियो. तो which among the following type of coal produce most heat? सबुठारु को कोइलाटा अधिका heat produce करे per unit ना anthracite. Anthracite सबुठारु अधिका heat produce करे.
तापर कहला व्हिच अमंग द फॉलोइंग वेव्स इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट आ भीतर हमें को वेवटा हमें यूज करथो फॉर कम्युनिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट कम्युनिकेशन करिया पे हमें को वेव यूज करना माइक्रोवेव मन रखिबो माइक्रोवेव्स इज ए वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स this is a one type of which waves na electromagnetic waves and electromagnetic waves are used for communications by artificial satellites right तो एटा को वेव होबो पिले ना माइक्रोवेव्स तो माइक्रोवेव्स इज यूज्ड फॉर communication by artificial satellite तापर पिले कहला व्हाट इज फाउंड इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हमको कोन मिलियो what is found in frequency modulation what is found in frequency modulation देखो frequency modulation ला कोन होबले ना फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी रहिबो को फ्रीक्वेंसी ना फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी तो what is found in frequency modulation that is fixed frequency हला तापर देखो माने फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी मींस फ्रीक्वेंसी कोन होबो सेम होबो तापर देखो बिले when the speed of a car is double then what will be the braking force of the car to stop in the same direction तार हमको केते ब्रेक लगा पड़ियो ब्रेकिंग फोर्स केते होबो तो एटा केते ब्रेकिंग फोर्स हमें अप्लाई करिबा तो केते ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई करिबा केमते हम फाइंड आउट करिबा ना हमें जानि जे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाउ मच ना हाफ mv² तो एठी काइनेटिक एनर्जी तमरो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू व्हाट v² तो डबल हेची स्पीड डबल हेची तो स्पीड जे डबल हेची केते हिजिवो 2v² इज केते आसीबो ना 4v² तार काइनेटिक एनर्जी केते गुणा बढ़ुची ना काइनेटिक एनर्जी 4 गुणा बढ़ला तो जेहेतु काइनेटिक एनर्जी 4 गुणा बढ़ुची ता मन तुमको केते फोर्स अप्लाई करिया पड़िबो ना 4 गुणा एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करिया पड़िबो 4 गुणा केते ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई करिया पड़िबो ना 4 गुणा ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई करिया पड़िबो तार एटा केते हो पिले 4 times कौन पे लेटा हबो 4 times तापर कहला द डायमेंशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम इज दैट ऑफ इंपल्स कहार डायमेंशन होची सेम कहार डायमेंशन होची सेम इंपल्स सहित कहार डायमेंशन सेम ताले फर्स्ट टाइम पहले हम इंपल्स डायमेंशन फाइंड आउट करिवा इंपल्स डायमेंशन कोन होबो ना I = F * T तो F टा होची कोन ना m1 l1 t - 2 that is your F and T कोन हिजिवो ना that is t1 T टा कोन हिजिवो t1 ताले फिर एटा देखो केते होबो ना एटी आसीबो m1 l1 t - 1 आसीबो m1 l1 t - 1 बट तापर देखो से कहि जे कहार समान हबो का सहित जदि में वॉल्यूम रो डायमेंशन लिखिबा ताले वॉल्यूम रो डायमेंशन केते हबो पहिले l रो q हबो वॉल्यूम रो डायमेंशन केते हबो पहिले l रो q तापर देखो जदि हमें मोमेंटम रो फाइंड आउट करिया मोमेंटम इक्वल टू कोन ना मोमेंटम इक्वल टू p = m * v तो m टा होची कोन ना मास m1 एंड v होची कोन हिजिवो ना दिस v वेलोसिटी जो डिस्टेंस अपन टाइम मींस कोन हिजिवो ना l1 t - 1 ताले एटी टोटल टा केते आसीबो ना m1 l1 t - 1 ताले मते कोइ ये जहा ये भी से ताले कहा से समान होची ना मोमेंटम से समान होची ताले द डायमेंशन ऑफ व्हिच द फॉलोइंग इज द सेम दैट ऑफ इंपल्स इज व्हाट इज मोमेंटम कहा से समान होची ना मोमेंटम से समान होची क्लियर तापर देखो व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल क्वांटिटी आ भीतर कोडा होची तुम्हारा फंडामेंटल क्वांटिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल क्वांटिटी देखो हमर दी प्रकार क्वांटिटी अछि कोन कोन ना गोटे होची फिजिकल क्वांटिटी आ गोटे होची सॉरी फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल quantities are of two types one is fundamental quantities another derived quantities one is fundamental quantities and another is derived quantities
तो फिजिकल क्वांटिटीज होची दी प्रकार गोटे होची फंडामेंटल क्वांटिटीज आ गोटे होची कोन ना डिराइव्ड क्वांटिटीज तो व्हाट डू मीन बाय फंडामेंटल क्वांटिटी ना जोटा होची फिक्स्ड क्वांटिटी जहार की क्वांटिटी होची फिक्स्ड ताको हम कहबा फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी होची कोन ना जोटा फंडामेंटल क्वांटिटी रो डिराइव कराइथिबो जोटा को हमें फंडामेंटल क्वांटिटी रो डिराइव करथिबा ताको हम कोन कहबा ना डिराइव्ड क्वांटिटी बोली कहबा जोटा को हमें फंडामेंटल क्वांटिटी रो डिराइव करथिबा बुझियला तो देखो वॉल्यूम गोटे velocity and force these are the known as derived quantities एटा सब होची कोन ना derived quantities but fundamental quantities सातटा fundamental quantities अछि केतरा ना 7 fundamental quantities are there what are the 7 fundamental what are they the first one is length you know mass length time electric current then temperature then amount of substance and then another is what luminous intensity so these sevens are the these sevens quantities are known as fundamental quantities ei jo satra quantities ko ame kon kaiba na fund आप आ सहित भी fundamental quantities सहित भी दीटा मध्य extra दीटा quantities को कहा जाय supplementary fundamental quantities and these are the one is the radian another is the you know that is one is solid angle and another is plane angle गोटा होची solid angle और होची कोन बोले ना plane angle बुझियला तो ये देखो ये होची ताले जो हमरो वॉल्यूम वेलोसिटी फोर्स ई तीनटा को कोथरे आसु नाही ना ई तीनटा को फंडामेंटल क्वांटिटीज आसु नाही ताले कोडा हो पिले ना टाइम है कोडा हो टाइम तो टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज कोडा को ना वॉल्यूम वेलोसिटी फोर्स दीस आर द डिराइव्ड क्वांटिटीज ओके तब देखो व्हाट ए रिंग ऑफ मेटल इज हिटेड व्हाट हैपेंस टू इट्स होल से कहि जी जदी when a ring of metal is heated what happens to its whole ring of metal को जदी हम हिट करबा ताल तार होलटा कोन हबो होलटा कोन हबो ना when a ring of metal is heated what happens to holes ना it expands होल कोन हबो ना expand हो मन रखिबो होल कोन हबो expand करिवो क्लियर ताबा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन Question kala if the diameter of the capillary tube is double then the rise of the water in it will be se kala jodi if the diameter of the capillary is double the diameter je double he jauchi jodi mara diameter double he jauchi then the rise of water it will be the rise of water kon hobo then the rise of water it in it will be देखा पिले कैपिलैरिटी माने कैपिलैरिटी एक्शन होची कोन ना केते राइज होची केते फॉल होची कैपिलरी ट्यूब रे वाटर केते राइज होची वाटर केते फॉल होची सेटा हम कहबा कैपिलरी एक्शन तो कैपिलरी एक्शन रो एक्चुअली हाइट ता कहा पर डिपेंड करिवो ना उले फार्मूला मन रखिवो फार्मूला मन रखिया दरकार नै बट मो फार्मूला हिसाब तुम कहि दोची बट तुमको जोडा मन रखिया कहबी सेटा मन रखिवो आ भितरु माने हाइट रो फार्मूला होची ए बट एग्जैक्टली ए फार्मूला नो बट फॉर द सिंपलिसिटी मो ई फार्मूला को लिखि पारिबी So h देखो h कहा कहा ऊपर डिपेंड करछि ना h इज डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट होछि सिग्मा सिग्मा इज व्हाट सरफेस टेंशन तो फर्स्ट सरफेस टेंशन ऊपर डिपेंड करछि फर्स्ट कहा ऊपर डिपेंड करा ना सरफेस टेंशन ऊपर डिपेंड करछि तो जो हाइट कहा कहा ऊपर डिपेंड करछि ना फर्स्ट होछि सरफेस टेंशन ऊपर डिपेंड करला सेकंड रो इज व्हाट ना रो इज अ डेंसिटी ऊपर डिपेंड करछि तब तीन रे होछि कोना ए रो जी आर सॉरी h नो r एटा rho g r and r is what radius of the capillary tube radius of the capillary tube पर डिपेंड करछि आउटा कहा पर डिपेंड करछि ना देखो थीटा ऊपर दैट इज थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ कांटेक्ट तो आ ऊपर डिपेंड करछि बुझियला तो बिले देखो इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब मींस व्हाट से कहि छी जदी रेडियस ता कहा को बुझो डायमीटर को तो जदी डायमीटर जे डबल होई त मन देखो h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by r r ता सेमते के देना इनवर्सली प्रोपोर्शनल बुझ पड़ला कि नहीं तो जदी r ता जदी डबल हे जाउची ता माने से कहि छी जे केते राइज हबो वाटर इन इट केते राइज हबो केते राइज हबो ना जदी ये जदी डबल 2r हेला तले हाइट केते हे जीवो ना h/2 हे जीवो त माने हाफ राइज हबो केते हबो पिले हाफ राइज हबो
आउ एटा होची माने कोन कहले गोटे होची माने कॉमन सेंस एठी लगे परिवो जे कॉमन सेंस या जे होची कैपिलरी ट्यूब रे कोन ना जेते तमर कोन हबो ना होची जो कैपिलरी ट्यूब रो डायमीटर की रेडियस जेते कम हबो सेते कोन हबो ना वाटर सेते राइज हबो बुझला कि नहीं तो सेते कोन हबो पिले ना वाटर राइज हबो तो वाटर रो जो राइज टा एक्चुअली डिपेंड करे कहा ऊपर ना डायमीटर ऊपर डिपेंड करे बुझला कि नहीं तो ऑफ कोर्स एटी जे डायमीटर डबल अछि तो डायमीटर डबल माने बुझ परछ तो डायमीटर माने अधिका अछि तो डायमीटर जर अधिका अछि ऑफ कोर्स कोन हबो ना होची कम ही उठिबो राइज कोन हबो कम राइज हबो तो जेहेतु कम राइज हबो ताले कोन हबो हाफ हबो हला केते पर्यंत उठिबो हाफ पर्यंत उठिबो तब देखो क्वेश्चन नंबर 11 व्हाई द नीडल ऑफ आयरन स्विम्स ऑन वाटर सरफेस देन इट इज when it is kept gently जदि हमें कोन करबा ना गोटे नीडल को नेकी जदि आयरन नीडल को ने हमें स्विम करबा वाटर रे माने जदि सरफेस रे वाटर सरफेस जदि हमें जेंटली नेकी पुट करबा तो से कोन करे ना स्विम करे ड्यू टू व्हाई ना ड्यू टू सरफेस टेंशन ना ड्यू टू सरफेस टेंशन पई ही कोन करे ना तुम जानिथिबो आयरन नीडल स्विम्स ऑन वाटर सरफेस ड्यू टू सरफेस टेंशन एंड वाटर ड्रॉपलेट आर स्फेरिकल नेचर ड्यू टू सरफेस टेंशन देन तमरा होची कोन ना जो जानिथिबा स्मॉल इंसेक्ट कैन walk on the water surface due to combined surface tension so these are the behaviors shown by the water is known as surface tension तो एरा एक्चुअली बिहेवियर के देखे ना होची वाटर देखे तापर कोन कहले देखो क्वेश्चन नंबर 12 the mass of the star is 2 times the mass of the sun the mass of the star the mass of a star is 2 times the mass of the sun बुझेला कौन कहला ना द मास ऑफ ए स्टार इज 2 टाइम्स द मास ऑफ द सन द मास सन रो मास 2 टाइम अधिका तो हाउ इट विल कम टू एन एंड तो सेटा को हमें कौन कहबा न्यूट्रॉन स्टार कहबा ना ब्लैक होल कहबा ना व्हाइट ड्वार्फ कहबा ना होचे रेड जायंट बोली कहबा पहिले ताको कौन कहबा ना तो हमें कहबा न्यूट्रॉन स्टार तो हमें कौन कहबा पहिले ना न्यूट्रॉन स्टार बोली के हम तो कहबा तो जेतबे मास ऑफ द स्टार इज 2 टाइम्स द मास ऑफ द सन जेतबे मास ऑफ द स्टार 2 गुना बढ़ी जाए मास ऑफ द सन थारु तो सेतबे ताको हम कोन कहबा ना सेतबे से एंड जो हुई हां से जो तार जो एंड जो आसे से एंड ता होची कोन ना कहा को कन्वर्ट हुए ना न्यूट्रॉन स्टार को कन्वर्ट हुए कोडी कन्वर्ट हुए पहिले ना न्यूट्रॉन स्टार को कन्वर्ट हुए क्लियर तबरे क्वेश्चन नंबर 13 देखो कोन कहला ना रेन ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम ग्रेट हाइट व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू तो जेतले जदि हम गोटे रेन ड्रॉप जदि ग्रेट हाइट माने बहुत ऊंचारू जदि पडुची बहुत हाइट जदि पडुची ताहाले कोन हबो इटी फास्ट कोन हबो तारे क्वेश्चन नंबर 13 देखो कोन कहूची ना होची जदि कोनोसी गोटे वेलोसिटी फास्ट रेन ड्रॉप जदि कोनोसी गोटे हाइट रो आसीबो ताहाले तार वेलोसिटी फास्ट कोन हबो इंक्रीज हबो तो हमें कोन लिख परिया दे फॉल with that ultimate velocity which are different for different droplets तापर कहला they fall with same ultimate velocity their velocity increases and they fall with a different velocity on earth and out कोन कहला ना their velocity increases and fall with the same velocity on the earth तो फर्स्ट हमें कोन इट तो ऑप्शन कोन हबो ना ऑप्शन ए डी हबो 13 नंबर ऑप्शन कोन हबो डी तो 13 नंबर ऑप्शन कोन हबो पिले ना डी हबो their velocity fast increases velocity fast कोन हबो increase हबो and they fall with the same velocity on the earth same velocity means constant velocity same velocity means what constant velocity एवं ये constant velocity का हमें कहया मते ultimate velocity ना सॉरी it is told as ako हम कोन कहि थाउ constant velocity or it is known as मने पड़नी एटा तो आको मते आ गोटे को velocity को आजे ओके सो लेट इट बी ताले हमर एटी क्वेश्चन जो कहितला क्वेश्चन देखो ना जदि से कहला रेन ड्रॉप फॉल फ्रॉम ग्रेट हाइट व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ना कोडा हबो ना डी ऑप्शन कोन हबो डी दैट इज देयर वेलोसिटी फास्ट इंक्रीज हो फास्ट वेलोसिटी कोन हबो इंक्रीज हबो तापर कि सब पर पढ़ि साला पर द वेलोसिटी कोन हिजबो कांस्टेंट हिजबो तापर कहला ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स फोटो स्टेट मशीन वर्क आ भितर को टेक्निक अनुसार हमर फोटो स्टेट मशीन वर्क को टेक्निक अनुसार फोटो स्टेट मशीन वर्क करे को स्टेटमेंट अनुसार बिले ना एटा होची इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेजिंग कोडा हबो बिले ना इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेजिंग तापर कहला 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू
1 kilowatt hour 1 kilowatt hour मन रखियो 3.6 मेगाजूल केते हो पिले 3.6 मेगाजूल तापर कहला व्हाट इज द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट टू बी लॉन्च्ड इन स्पेस तो जेहेतु एटा पचारची अर्थ पाई पचारची तो हम तो आनथिबो अर्थ रो एस्केप वेलोसिटी होची केते ना इफ आई कैलकुलेट escape velocity for earth that would be 11.2 kilometer per second, right? 11.2 kilometer per second, and the escape velocity of earth can be found out by the help of formula, that is 2 gm by what r, right? तो escape velocity केता हो पिले ना 11 किलोमीटर पर सेकंड तो मिनिमम पचारची तो मिनिमम कोडा हबो ना होची 16 c हबो 11.2 kilometer per second, but point 2 is not given here, so answer will be 11 kilometer per second. तापर कहला होची क्वेश्चन नंबर 17 देखो, which of the following statement is true when we see rainbow? तो आ भीतर कोई स्टेटमेंट होची ट्रू जेतले हमें रेनबो को देखि तो now we face sun and droplet, the sun remains behind us and we face raindrops. In light rainfall we face sun, the sky remains clear and the sun is at a lower position in the sky. तो कोड होबिले ना होची the sun remains behind us सबले मन रखिबो opposite sign opposite रे सबले sun रो opposite side रे कोन तयारी हुए ना रेनबो तयारी हुए এবং রেনবোটা सबले केमती प्रोड्यूस ना सन रो अपोजिट मन रखियो सन जो पाखरे थाए रेनबो सेट पार्ट सेठी तयारी हुए नाही सन रो अपोजिट साइड रे कोन प्रोड्यूस हुए ना होची रेनबो ता माने सन जदी अछि तो सन रिमेन्स बिहाइंड अस तो ऑफ कोर्स हमें जते रेनबो को देखुजे ता माने रेनबो को जते हमें देखुजे माने सन टा पोजीशन टा कोडी हम पछे पटे अछि तो बिहाइंड अस ओके and then we face the raindrop तापर हम जेके raindrop को देखो तो raindrop को देखला पर जानिथबो रेनबो केंति प्रोड्यूस हुए ना जतले सनलाइट जतले raindrop ऊपर पड़े सेतले कोन हुए ना होची dispersion will takes place because काहे कि dispersion है because these small raindrops acting like a acts like a tiny droplet, sorry tiny prism, act like a tiny prism. तो जो स्मॉल रेनड्रॉप गुडा को एक्चुअली ऐड करे कोन कोन ना गोटे गोटे छोटा छोटा टाइनी प्रिज्म बळे ऐड करे तो जते टाइनी प्रिज्म बळे ऐड करछि ता माने होछि कोन ना जते बळे हमें कोन करबा ना होछि जते सनलाइट जे कि सेही छोटा छोटा ड्रॉपलेट ऊपर जते पड़िबो तो सेते कोन हो ना डिस्पर्शन विल टेक्स प्लेस, सो ड्यू टू डिस्पर्शन कोन होबो ना होछि सातटा कलर हमको देखा हो क्लियर. तब देखो क्वेश्चन नंबर 18 कहला हाउ मच कैलोरीज ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड बाय ए बॉइल्ड एग. How much calorie of energy is released? केते कैलोरी रो एनर्जी रिलीज हुई बाय ए बॉइल्ड एग थर केते एनर्जी रिलीज मन रखिबो बॉइल्ड एग थरु रिलीज हुई मन रखिबो 77. How much? 77. एबे जो क्वेश्चन पर आसे क्वेश्चन नंबर 19. Question 19 एबे जोटा हम कहउथि द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन ए प्रिज्म इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तक हम कोन कहै पिले ना रिफ्रैक्शन बोली कहबा, सॉरी रिफ्रैक्शन डिस्पर्शन, सॉरी दिस इज डिस्पर्शन, it is known as dispersion, sorry I am extremely sorry. So this is dispersion of light. कहीं ना देखो जदी गोटे प्रिज्म ऊपर हम जदी कोन पकेवा ना व्हाइट लाइट पकेवा तो जो व्हाइट लाइट कोन हो ना व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स तो एठी 7टा का कलर हमको मिलिबो राइट. एठी हम विवग्यो हमको कोन मिलिबो ना एठी विवग्योर मिलिबो ठीक अछि. तो 7टा कलर हमको मिलिबो क्लियर. तो ताको हमें ए जो प्रोसेस टाको हमें कोन कहबा ना डिस्पर्शन बोली कहबा. तो डिस्पर्शन इज द व्हाट ना डिस्पर्शन इज द प्रोसेस इन व्हिच the white light splitting into 7 colors, the white light splitting up to 7 colors, the white light splitting of 7 colors, the white light splitting into 7 colors of light. तापर क्वेश्चन नंबर 20 देखो कोन कहला a boot will submerge when it displays water equal to its own कोन हो weight, equal to its own weight. तो कौन कहला बोट विल सबमर्ज व्हेन इट डिस्प्लेस वाटर इक्वल्स टू इट्स व्हाट ओन वेट. तो एटा कोन होपिले ना होची 20 नंबर बी हबो. तबरे 21 कोन कहिछि ना सरफेस टेंशन इज ए लीक इन ए लिक्विड इज ड्यू टू.
surface tension कौन पाई हुआ ना due to cohesive force between the molecules, between cohesive force between the molecules. कहीं ना देखो surface tension कौन पाई produce हुई? Yes, Kunal Behra, right? Vivgyor, Kunal Behra, wait, very good. Kunal Behra, archimedics. Yes, it is known as archimedics principle. It is known as archimedics principle, right? The weight of the water displaced um, is equal to the buoyant force acting upon it, right? And buoyant force is equal to the weight of the body. Then surface tension of a liquid is due to unbalanced cohesive force, right? So surface tension liquid रे कौन पाई आसे ना due to unbalanced cohesive force पाई आसे, right? तार एटा कौन होगा cohesive force between the molecules. तापर कहला a circular plate, a cube and a sphere all are made of same materials. जति गोटे मु circular plate नेली आ गोटे cube नेली and sphere नेली समस्ते कौन हेचंती ना all are made of same materials, समस्ते same material रे तैयारी हेचंती and having the same mass मध्ये same अछि. तमने गोटे circular plate, cube and sphere तीनटा जिंस नियाला तीनटा जिंस रो material same and mass भी same are heated 300 degree Celsius and left in a room. ताको कौन करना गोटे 300 डिग्री सेल्सियस हिट कराला एवं ताको गोटे रूम रे छडायला से कहिची व्हिच वन ऑफ व्हिच वन देम विल हैव द स्लोएस्ट रेट ऑफ कूलिंग. आ भीतर कोटार स्लोएस्ट रेट ऑफ कूलिंग हबो कोटार स्लोएस्ट स्लोएट व्हिच of them will have the slowest rate of cooling. पहले एटा कोन हबो ना दिस विल बी स्फीयर. एटा कोन हबो ना स्फीयर हबो. 22 कोन हबो सी. तने स्फीयर रा होची कोन हबो ना स्फीयर टा होची कूलिंग हबे टे टाइम लागियो. स्फीयर टा कूलिंग हबे कोन लागियो ना टिके टाइम लागियो. All will cool at the same rate because material is same. Yeah, material is same, but into difference होची कौन ना होची एरिया ऑफ डिफरेंस करची, राइट? कहीं सर्कुलर प्लेट रो एरिया जहाँ क्यूब रो एरिया से नुह कि हमर स्फीयर भी एरिया से नुह हला तेनो जो रेट ऑफ कूलिंग एक्चुअली एरिया ऊपर डिपेंड करची. रेट ऑफ कूलिंग कहाँ ऊपर डिपेंड करिवो ना एरिया ऊपर डिपेंड करिवो. अच्छा तापर देखो क्वेश्चन नंबर 23. Question number 23 कौन कहला ना ऑप्टिक्स फाइबर आर यूज्ड इन. ऑप्टिक्स फाइबर कोड यूज करा जाए. एनीवन? क्वेश्चन नंबर 23. ऑप्टिक्स फाइबर यूज्ड इन. ऑप्टिक्स फाइबर कोड यूज करा जाए एंडोस्कोपी रे यूज करा जाए. मन रखिबो ऑप्टिक्स फाइबर आर यूज्ड इन एंडोस्कोपी हला. Okay. तापर द क्वेश्चन कौन गला ना two waves each of amplitude
1.5 नानोमीटर तो एम्पलीट्यूड केते दे देला ना सॉरी 1.5 अच्छी तो एम्पलीट्यूड केते दे दीची 1.5 इज द एम्पलीट्यूड देन फ्रीक्वेंसी कोन हेजिवो ना फ्रीक्वेंसी अच्छी केते ना 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हाउ मच 10 हर्ट्ज आर ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विथ द स्पीड केते देला स्पीड इट इज 20 mm per second 20 mm per second तो तापर कहला डिस्टेंस बिटवीन टू adjacent nodes से पचाची द डिस्टेंस इन mm बिटवीन टू adjacent nodes दीटा नोड्स विथ डिस्टेंस ता केते हबो तो दीटा नोड्स विथ डिस्टेंस मीन हमको वेवलेंथ कैलकुलेट करिया पे कहिछि राइट तो वेवलेंथ केते हबो ना वेवलेंथ रो फार्मूला होछि कोन ना वेवलेंथ इक्वल टू हाउ मच वेवलेंथ इक्वल टू speed divided by how much that is frequency speed divided by frequency what is speed here so speed is 20 divided by frequency is over 10 right तो केते हिजबो ना 2 mm हिजबो तो ऑप्शन केते हो प्ले ना 2 mm अच्छा 2 mm देछि देन तापर कहिछि द डिस्टेंस इन mm बिटवीन adjacent nodes तो 50 से पुनी कहिछि adjacent nodes पुनी कहिछि राइट तो adjacent nodes ले केते हबो adjacent node केते हिजबो ना 1 mm each केते हबो ना 1 mm each how much ना 1 mm right it's not 1 mm this is D option how much D right Kunal Behra you are correct D is the option now see 25 the snow on the mountains does not melt at all once when it is heated by the sun because combine anyone because it reflects most of the heat from the sun combine because it reflects most of the heat from the sun तापर कहला a person standing on a railway platform listen to the whistle of arriving and departing the train the whistle heard is तापर whistle जो heard होची तापर एटा होची कोन केमति हबो ना higher pitch when train arrives से कहला at the same is both all the rest एटा हबनी of higher intensity when train arrives एटा हबनी on higher pitch हबो when train arrives that is Doppler effect and of higher pitch when train departs एटा तो हबनी तो higher pitch when train arrives जेता train arrive करियो सेता हमको high pitch सुना that means this is known as what Doppler effect अब हम कोन कहबा पहले Doppler effect बोली कहबा देन तापर चला क्वेश्चन नंबर 27 27 कोन कहला holography is a technique of holography कोन टेक्निक टा कोन holography is the technique of now one of holography is a technique of recording a permanent three-dimensional photograph of a given single color or a multicolor ita D तो ऑप्शन कोन होबिले D तो recording a permanent three-dimensional photograph of a given single color or a multicolor तापर कहला क्वेश्चन नंबर 28 देखो कोन कहिछि ना the velocity of sound in moist air is more than the dry air because the moist air has काहे कि कोन पाई ना because moist air has what ना less density than dry air moisture has less density than what dry air moisture has less density than what dry air तापर क्वेश्चन नंबर 21 देखो 29 देखो 29 कोन कहला an ice block with a piece of lead embedded in its floats in water if ice melts the water level कोन होइबो जदी ice जदी melt होची then water level कोन होबो से कहला an ice block with a piece of lead embedded in its floats in water if ice melts the water level कोन हिजो तळु पळे false water levels false
तब कहला the velocity of heat radiation in vacuum is the velocity of heat radiation in vacuum is vacuum रे पचारछि heat radiation in vacuum कोन होपिले the velocity of heat radiation in vacuum is vacuum रे heat radiation टा होछि कोन ना equal to the light मन रखियो equal to the light कना heat radiation रो speed टा heat radiation is a electromagnetic wave मन रखियो heat radiation बा radiation is an electromagnetic wave radiation is an electromagnetic wave EM wave आपको कौन कहे ना EM wave बोली कहे का को radiation तो all the radiation are EM waves electromagnetic waves and the speed of the electromagnetic waves or radiation is equal to the speed of the light in vacuum तो कहार लाइट से तो समान रेडिएशन रो कहार लाइट से तो समान ना पिले हीट रेडिएशन रो वेलोसिटी बा रेडिएशन रो वेलोसिटी बा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रो वेलोसिटी कहार वेलोसिटी समान ना इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट राइट तो क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन 31 कौन कहला क्वेश्चन नंबर 31 देखो the plastic material commonly used for making gears wheels is कहला the plastic material commonly used for making gear wheels is को प्लास्टिक मटेरियल टा commonly यूज करा जे मेकिंग गियर्स व्हील कोडा पिले ना मन रखियो कोडा के यूज करा जे ना नाइलॉन्स का को जे नाइलॉन्स भी यूज करा तब कहला अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन डू नॉट रीच द अर्थ बिकॉज़ अर्थ एटमॉस्फेयर इज सराउंडेड बाय जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अछि से अर्थ एटमॉस्फेयर को आसी पारु नाही कोन पई ना ड्यू टू ओजोन ओके तापर कहला होछि क्यूरी इज द यूनिट ऑफ क्यूरी कहार यूनिट ना रेडियो एक्टिविटी मन रखियो रेडियो एक्टिविटी रे एसआई यूनिट होछि कोन ना क्यूरी ओके तो क्यूरी इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्यूरी इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी तापर कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ओवन ओवन रे हम कोडा यूज करथो एक्स रे यूवी रेज माइक्रोवेव्स रेडियो वेव्स कोडा यूज करथो ना मन रखियो माइक्रोवेव्स तो microwaves is also electromagnetic waves microwaves is also electromagnetic waves and this is a one type and this is also a transverse wave এটা হচ্ছে মধ্যে কো ওয়েভ না ট্রান্সভার্স ওয়েভ বুঝলা তো which of the following is used in often oven रे हमें microwaves use करथो and microwaves is a electromagnetic waves and which is a transverse wave microwave electromagnetic waves is a what transverse wave right okay then when heated from 0 degree celsius এটা হবো কত না 0 degree celsius right to 100 degrees celsius volume of a given mass water will be कौन होबो when heated from 0 degree celsius to 100 degree celsius जेतरा में हीट करबा कोट केते ना 0 डिग्री रु 100 डिग्री से कोई ची given mass of water will be कौन होबो anyone decrease and then will increase first कौन होबो ना decrease होबो then it will increase होबो right तो when you heated from 0 celsius to 100 degree volume of a given mass तो वॉल्यूम फर्स्ट कोन होबो डिक्रीज होबो फर्स्ट वॉल्यूम कोन होबो कॉन्ट्रैक्ट होबो देन तापर कोन होबो ना इंक्रीज राइट ओके
ओके तापर देखो क्वेश्चन नंबर 36 तब देखो क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 36 कौन कहूची ना एनर्जी इज कंटिन्यूअसली क्रिएटेड इन द सन ड्यू टू द एनर्जी रे जो एनर्जी कंटिन्यूअसली तयारी होची कोठी सन रे ड्यू टू व्हाई ना दीटा प्रोसेस होची कोठी होची न्यूक्लियर फ्यूजन आउट होची न्यूक्लियर फ्यूजन बट सन रे जोटा होची सेटा होची न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस कोडा होची ना न्यूक्लियर फ्यूजन कोठी होची ना सन रे होची जोटा कि न्यूक्लियर फ्यूजन होची कोना फ्यूज होबा दैट मींस दीटा लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन होचंती लाइट न्यूक्लियाई दीटा लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन हेकी हमको फॉर्मेशन कोन करछ ना हेवी न्यूक्लियाई फॉर्मेशन करछ राइट तो दीटा लाइट न्यूक्लियाई मिसी कोन करछ ना हेवी न्यूक्लियाई फॉर्मेशन करछ दिस इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन बेसिकली कोड वे ना सन रे राइट काइना हाइड्रोजन एटम कंबाइन हेकी कोन प्रोड्यूस करता है हीलियम एटम प्रोड्यूस करता बा हाइड्रोजन न्यूक्लियस कंबाइन हेकी कोन प्रोड्यूस करती ना हीलियम न्यूक्लियस प्रोड्यूस करती राइट तापरे जो न्यूक्लियर फ्यूजन ताले एठी ताले 36 जो आंसर टा कोन हबो ए हबो दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन जो सन रे हुए बट न्यूक्लियर फिजन कोड हुए पिले ना न्यूक्लियर फिजन कोड हुए ना न्यूक्लियर फिजन हुए जो हमरो न्यूक्लियर रिएक्टर रे न्यूक्लियर रिएक्टर हमर कोन हुए पिले ना न्यूक्लियर फिजन हुए राइट तो न्यूक्लियर फिजन टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियर रिएक्टर मन रखियो न्यूक्लियर फिजन टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियर रिएक्टर राइट न्यूक्लियर फिजन टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर कोड यूज करा जाय ना न्यूक्लियर पावर प्लांट रे यूज करा जाय कोड यूज करा जाय न्यूक्लियर पावर प्लांट रे यूज करा जाय ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 in electronics what comes under tank circuit in electronics what comes under tank circuit electronics रे कोटा tank circuit रे अंडर आसे कोटा 37 कोटा आसे ना कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस मन रखियो अंडर टैंक सर्किट अंडर क्या आसे ना कैपेसिटी एंड इंडक्टेंस तापर देखो कूलिज ट्यूब इज यूज्ड टू प्रोड्यूस कूलिज ट्यूब बोली गोटे जिंस अछि सेटा कोन पई यूज करा जे ना सेटु हम कोन प्रोड्यूस करा जे ना इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एक्स रेज मन रखियो कोन प्रोड्यूस करे ना एक्स रेज तापर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रेगुलेट इलेक्ट्रिक सप्लाई आ भीतर कोटा इलेक्ट्रिक सप्लाई को रेगुलेट करे आ भीतर कोटा इलेक्ट्रिक सप्लाई को कोन करे रेगुलेट करे मन रखियो जिंजर डायोड कोन करे ना होची इज यूज्ड फॉर रेगुलेट इलेक्ट्रिक सप्लाई को कोन करे ना रेगुलेट करे तापर कहला द सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी इज द प्रोसेस ऑफ तले एटा कोन होबो ना सोर्स ऑफ सन एनर्जी केमती तयारी करछि को प्रोसेस ना पहिले मन रखियो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस रे ही तयारी करछि कोन हो पहिले एटा ना न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस तो क्वेश्चन नंबर 40 कोन हैला सी न्यूक्लियर फ्यूजन तापर क्वेश्चन नंबर 41 आसो 41 कोन कहै छै गामा रेज कैन कॉज कोन कहला ना जेनी म्यूटेशन स्नीजिंग बर्निंग फीवर कोन कर परियो गामा जो हमरो गामा रेज अछि आ भीतर कोटा कर परियो जेन म्यूटेशन कर परियो स्नीजिंग कर परियो बर्निंग या फीवर कोटा कर परियो पहिले ना मन रखिबो जो गामा रेज कैन do gene mutation कौन करे the gene mutation तब देखो the substance which conducts current in the solid state is को substance टा भीतर कौन करे ना conduct करे current in solid state अभी तो solid state रे थिबो but से current को कैरी करथो वही substance which conduct current in the solid state कोडा solid state रे किए conduct करे heat diamond graphite iodine and sodium chloride कोडा होबिले ना ग्राफाइट कोडा होबिले ना ग्राफाइट कोन होबिले एटा ग्राफाइट तबरे क्वेश्चन ऑफ 43 को आसो क्वेश्चन 43 को होची व्हिच सेट ऑफ कंडीशन रिप्रेजेंट्स द इजीएस्ट वे टू लिक्विफाई ए गैस कोडा होची इजीएस्ट वे टू लिक्विफाई ए गैस को लिक्विफाई करिया व्हिच सेट ऑफ कंडीशन रिप्रेजेंट्स द इजीएस्ट वे टू लिक्विफाई ए गैस
कौन पिले एटा ना लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर मन रखियो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर तो एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर we can easily liquefy a gas तापर कहला what color light related to what is color of light related to aperture frequency quality and velocity what is color of light आ भितर कोटा सहित लिंक अछि amplitude frequency quality and velocity color of light what is color of light related to कोन पिले ना color of light related to only what amplitude मन रखियो तब कहला what principle or laws explain the working on the hydraulic brakes in the automobiles देखा hydraulic brakes मन रखियो गोटे hydraulic brakes एठी दे दीची आउट जिंस एग्जांपल मन रखियो hydraulic lift तो ये भी मध्य कहा प्रिंसिपल से काम करे ना पास्कल्स लॉ कोन हो पिले पास्कल्स लॉ कोन कहूची ना प्रेशर एट ए पॉइंट इन ऑल डायरेक्शन इज सेम pressure at a point in all direction is same pressure at a point in all direction is same that means px equal to py equal to how much pz so pressure at a point in all direction is same okay then question number 46 देखो कौन कहला now the best conductor of heat among the following is आ भीतर कोटा होची best conductor of heat the best conductor of heat among the following is आ भीतर कोटा best conductor of heat तो देखो ऑप्शन देखो आ भीतर कोटा बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अल्कल मर्क्यूरी ईथर एंड वाटर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन पीरियड ता मन रखो मर्क्यूरी इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ व्हाट हीट so that's why we are using thermometer mercury in thermometer right then तापर कोन कला व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 47 आसा हम 50 टा क्वेश्चन डिस्कशन करबा हला तो क्वेश्चन नंबर 47 व्हाट इज व्यूड थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा हमें कोन देखि परिबा ना स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा हमें कोन देखि परिबा ना स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस then देखो क्वेश्चन नंबर 48 लास्ट 3 क्वेश्चन लेफ्ट क्वेश्चन नंबर 48 what apparatus is used to locate the summarized object so summarized object जो ऑब्जेक्ट उडा का समराइज्ड मींस जो ऑब्जेक्ट उडा का माने बुडी जाइथिबा ऑब्जेक्ट उडा समुद्र रे जो बहुत वर्ष पूर्व जहाज जोड़ बुड़ी गई अछि तो ताको हमें डिटेक्ट करिया पे कोन यूज करा जे ना सोनार यूज करा जे कोन सोनार बेसिकली हमें कोन करथौ ना अल्ट्रासोनिक वेव्स छाड़थौ कोन छाड़थौ पिले अल्ट्रासोनिक वेव्स छड़ा जाई थे बुझला कि नहीं अल्ट्रासोनिक वेव्स होची कोन ना 20000 हर्ट्ज रो जोटा अधिक आबो 20000 हॉर्स रो जोटा अधिक आबो तक हमें कहबा अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड इन सोनार राइट टू डिटेक्ट or to locate summarized object and also for detection of height of the sea रो height जानिया पई हेले हम मध्य यूज करथौ कोन ना होची अल्ट्रासोनिक वेव्स दैट इज सोनार राइट then question number 49 the instrument which used sound waves to measure the depth of ocean तो depth of ocean मध्ये से सेम कोन हबो ना सोनार depth of the ocean मध्ये जाने एबे मु कहली depth of the ocean जानिया पे मध्ये हम कोन यूज करथौ पिले ना से सोनार को यूज करे जे which is also ultrasonic waves तब देखो question of 50 which combination of color is the most convenient during day and night time day और night time रे कोडा होची most convenient मन रखिबा red and green होची most convenient at the day and at the night right so that's why in the traffic you know traffic रे हमें red light and green signal use करथौ to due to this reason right so which combination of color is the most convenient during the day and night time that is red and green सो आज हमें 50 टा क्वेश्चन डिस्कशन करलु हम आशा करू तुम माने 50 टा क्वेश्चन भल भाବରେ बुझी पारथिबो एवं तमनक द्वारा मध्ये किछि क्वेश्चन हेई पारिथिबो आ तेनु नेक्स्ट टाइम हमें पुनी जे डिस्कशन करिया पुनी 50 टा क्वेश्चन आनिबा न्यू क्वेश्चन डिस्कशन करिबा सो आज पई एति की नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस अगेन 50 क्वेश्चंस तो कंटीन्यूअसली डे बाय डे we are discussing
मोर एंड मोर क्वेश्चंस एंड आई थिंक आउ किसी क्वेश्चन ही रही जोटा कि माने जदि आम सब क्वेश्चन एमती डे बाय डे जदि आम 50 क्वेश्चन जदि एभव जदि आम डिस्कशन कर जिबा देन एमती गोटे टाइम आसियो जोटा कि प्राय फिजिक्स आम सब क्वेश्चन डिस्कशन कर देथिबा राइट आ कुछ नथिबो डिस्कशन करिया पे सो कंटिन्यूअसली आम सेटा को कौन करवा ना होची अचीव करवा राइट सो धीरे धीरे आम सेटा को अचीव करिया तो आज पई एतिकी सो पुणी पर देखा नेक्स्ट क्लास रे तो थैंक यू तो गुड बाय